Hello everyone, welcome to this class. आज हमें यही क्लास रे Geographical Fact रो complete environment को आज हमें प्रैक्टिस करिवा 100 MCQs जरिया रे आज रो क्लास टी प्रैक्टिस सेशन रहियो आपनकर फॉर योर एग्जाम SSB Junior Assistant क्लर्क पे बहुत हेल्पफुल हो आपण एही PDF नोट टी वीडियो डिस्क्रिप्शन रो डाउनलोड करि परिबे। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करिवा। Which of the following is considered a renewable source of energy? Which option is your right answer? Coal, petroleum, solar energy, natural gas. Try करूँ। Renewable source of energy होची solar energy. Option C होई जो यार right answer. Solar energy. सूर्य किरण होची एक कौन नवीकरण योग्य शक्तिर उच्च. Option C is your right answer. Next question number 2. The major constituent of the Earth's atmosphere is पृथ्वीर वायुमंडल रे सबुठारु अधिक परिमाण रे थिबा उपादानटी हेउची नाइट्रोजन गैस. ऑप्शन बी नाइट्रोजन जबक्षार जान इज राइट आंसर. 78% रहिछि 78% प्राय. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करंतु. Which gas is primarily responsible for the greenhouse effect? Carbon dioxide, CO2. कार्बन डाइऑक्साइड हेउछि तो गैस जहा वायुमंडल रे तापमात्रा वृद्धि करी ग्रीन हाउस इफेक्ट तैयारी करे. सो ग्रीन हाउस इफेक्ट पाई मुख्य दायी कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द ओजोन लेयर is mainly found in which layer of the atmosphere? वायुमंडल रो स्ट्राटोस्फियर नामक एक स्तर रे ओजोन लेयर रहिछि. ओजोन स्तर रहिछि. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करंतु. Which of the following is a major cause of acid rain? अम्ल वृष्टि. अम्ल वृष्टि रो मुख्य कारण कोन हि परिबो? मेजर कॉज कोन? अम्ल वृष्टि रो मुख्य कारण कोन? सल्फर डाइऑक्साइड. ऑप्शन ई इज योर राइट आंसर. सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल रे जलीय बाष्प सह मिसी अम्ल वर्षा सृष्टि करे. बुझियला. क्वेश्चन नंबर 6. The Chepak movement was primarily associated with the conservation of Chepak आंदोलन related to कहार सुरक्षा पाई. चिपक आंदोलन फॉरेस्ट रो सुरक्षा पाई, जंगल रो सुरक्षा पाई. ऑप्शन ए होइज राइट आंसर. चिपक आंदोलन जंगल एवं वृक्षरोपण से रिलेटेड तार सुरक्षा सहित जड़ित थिला. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करंतु. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दिस इज आपनकर कोन हे परिबो? जो पन्नी परिवार चोपा वेजिटेबल पी ले परिबो. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. बायोडिग्रेडेबल गोटे वेस्ट अटे. नेक्स्ट द टर्म बायोडायवर्सिटी रेफर्स टू. बायोडायवर्सिटी कोन कहंतु? बायोडायवर्सिटी कोन हिजबो? जाकु जैव विविधता कुआ जाय. जैव विविधता एथरे कोन समस्त प्रकार रो जीवजंतु एवं उद्भिद. जीवजंतु एंड उद्भिद को नहीं कि बायोडायवर्सिटी. दैट मीन्स variety of living organisms is your right answer. Option D is your right answer. Next question number 9. Which one is a non-renewable natural resource? Non-renewable natural resource माने जहाँ नवीकरण योग्य नुहे. कोइला हे जीवो गोटे सीमित संपद. Coal is your right answer. Option C. Next question number 10. The primary source of energy for most ecosystem is ecosystem रो परिसंस्था रो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कोन हे परिबो? परिसंस्था रो सूर्य. सन इज योर राइट आंसर. सन इज योर राइट आंसर. Which gas is released in large quantities during the burning of fossil fuels? जीवाश्म ईंधन
दहन समय रे बहु मात्रा रे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निर्गत हुए ऑप्शन बी होइछ राइट आंसर CO2 निर्गत हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 द प्रोसेस by which green plants prepare food is called केउं प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस आलोक संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा वृक्ष तार खाद्य प्रस्तुति करे सो फोटोसिंथेसिस इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 which of the following is an example of an ecosystem निम्नलिखित मध्यरु केउंटा एक इकोसिस्टम रो एग्जांपल अटे फॉरेस्ट इज गोटे इकोसिस्टम ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर राइट जंगल हेउचे एक जैव और अजैव उपादान को नहीं गठित एक संपूर्ण परिसंस्था नेक्स्ट द मेन कॉज ऑफ डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जोगु कौन हुए यही गैस ओजोन स्तर क्षय पई मुख्य कारण अटे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करंतु which organization is primarily concerned with the global environmental protection UNEP United Nations Environment Program विश्व परिवेश सुरक्षा पई कार्य करे UNEP is the right answer next World Environment Day is observed on World Environment Day को 5 जून को सेलिब्रेट करा दे जून मास 5 तारीख नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रो कथा कहबा ताले दिस इज आपनकर ओजोन लेयर रो प्रोटेक्शन सहित जडित अटे ओजोन लेयर इज द राइट आंसर ओके मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल ओजोन स्तर रो सुरक्षा सहित संपर्कित नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस मीथेन इज मीथेन होची गोटे ग्रीन हाउस गैस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 eutrophication of water bodies is mainly caused by excessive eutrophication of water body कौन है nutrients is होगी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर nutrients होबो ना eutrophication by ऑप्शन बी होइज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 which of the following is a primary consumer निम्नलिखित मध्यरु केउ प्राइमरी कंज्यूमर टाइगर ग्रासहॉपर ईगल स्नेक ऑप्शन बी ग्रासहॉपर इज द राइट आंसर झिंटिका ठीक अछि झिंटिका कोन करिवो उद्भिद को खाउथिबारु से एक प्राथमिक उपभोक्ता माने जो कंज्यूमर नेक्स्ट द रामसर कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विथ द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स ठीक अछि रामसर जो सम्मेलन विषय कथा बा या आर्द्र भूमि रो संरक्षण पई उद्दिष्ट अटे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया रे दिस इज आपनकर मध्य प्रदेश रे अधिक जंगल रही राइट आयतन दृष्टि मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 which of the following is known as the long of the earth forest जंगल होई जीवो जंगल गुडी का विपुल परिमाण रे जो अम्लजान प्रदान करूथिबारु याकु पृथ्वी रो फुसफुस कहा जाय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 the pyramid of energy in an ecosystem is always कौन है जो upright ऑप्शन D is your right answer परिसंस्था रे शक्ति पिरामिड सर्वदा कौन थाए upright थाए माने जो सीधा थाए क्वेश्चन नंबर 25 which of the following is an example of in situ conservation try करंतु which option is your right answer this is आपनकर कहार नेशनल पार्क है जो कि जातीय उद्यान नेशनल पार्क is your right answer next question number 26 the largest territorial ecosystem होची बायोस्फीयर ऑप्शन डी जीवमंडल होची पृथ्वी रो सबठारु बड़ तलभाग्य परिसंस्था next question number 27 which of the following pollutants causes
मीनामाता डिजीज, मीनामाता डिजीज आपनकर मर्क्यूरी हिजो पारद, पारद द्वारा ठीक अछि दूषित जल किबा जो से माछ को खाइबा द्वारा मीनामाटा रोग हुए। क्वेश्चन नंबर 28, द भोपाल गैस ट्रेजेडी was mainly caused by leakage of कौन, दिस इज आपनकर मिथाइल, मिथाइल हबो तो एटा, यस मिथाइल आइसो आइसो साइनेट, आइसोसाइनेट এই কারণରୁ जो भोपाल गैस ट्रेजेडी होइतिला, भोपाल गैस दुर्घटना होइतिला এই जो गैस टी लीक हिजबा जो। which of the following is the best method for reducing solid waste, best method कौन ही परिबो, reduce, reuse and recycle, option C is your right answer। next, the term biodiversity hotspot refers to an area having, refers to an area having कौन हिजबो, high species richness and endemism, option B is your right answer। okay, जैव विविधतार जो हॉटस्पॉट रे अत्यधिक प्रजाति एंड जो आंचलिक स्वतंत्रता ठीक माने जो एंडेमिक स्पेसीज देखा जानती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, which of the following is an example of XC2 conservation, XC2 conservation कोटा है जो जू है जो आपनकर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक अछि, प्राकृतिक स्थान बाहरी कृत्रिम संस्थार संरक्षण करबाटा होची आपनकर XC2 conservation। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 ट्राई करिबा। द क्योटो प्रोटोकॉल प्राइमरीली डील्स विथ, क्योटो प्रोटोकॉल कोन हिजबो, क्योटो प्रोटोकॉल दिस जो आपनकर ग्रीन हाउस गैस को कमाइबा जलवायु परिवर्तन रोकिबा सह जड़ित अटे, सो दिस इज क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन ए होइजबो यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, which gas contributes significantly to global warming and is released from rice fields and cattle, methane is your right answer, option ए हो यार राइट आंसर। ओके, धान बिल और जो गोरु गाई ठारू मिथेन गैस बहु परिमाण रे निर्गत हुए एवं दिस इज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करे विश्व तापन पे। नेक्स्ट, द नेचुरल होम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट कहजिवो, कोन कहजिवो हैबिटेट, कोनोसी जीवर प्राकृतिक रहिबा स्थान को तार आवास स्थली हैबिटेट कहजे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, which of the following is not a component of an ecosystem रो केउंटा गोटे कंपोनेंट नुह, प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकंपोजर, अरे भाई ऑप्शन डी रजे कंप्यूटर्स के हबो की बहुत माने इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, which layer of the atmosphere is closest to the earth surface, closest to the earth surface, which option is जो earth surface is जो आपनकर ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ट्रोपोस्फियर होची पृथ्वी पृष्ठर सबठारु निकटतम वायुमंडलीय स्तर। नेक्स्ट, द एसिड रेन जनरली हैज पीएच, एसिड रेन रो पीएच केते थाए बिलो 5.6, अम्ल वर्षार पीएच 5.6 रु कम थाए। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट आपनकर ओजोन हिजबो, ओजोन होची गोटे सेकेंडरी पोल्यूटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, the process of conversion of atmospheric nitrogen into usable compounds is called, ei process को कौन कहबा, ei process को कहजिवो नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑप्शन ए होइजबो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 ट्राई करंतु, which of the following is the largest source of the fresh water on earth, largest source कौन, glacier and ice caps is your right answer। next, the movement of toxic substance through different trophical level is called, different trophic level is called कौन कहजिवो, is biomagnification, option A होइजबो राइट आंसर, biomagnification। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42,
Which pollutant is commonly associated with automobile exhaust and can reduce oxygen carrying capacity of blood? Is ଆପଣଙ୍କର which pollutant ହେଇଯିବ କୁହନ୍ତୁ? Question number 42 try କରିବା. Carbon monoxide. Option A ହୋଇଯିବ right answer. Carbon monoxide କଣ କରୁଛି? ରକ୍ତରେ ଯୋଉ ଅମ୍ଳଜାନର ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ କ୍ଷମତାଟାକୁ ସେ ହ୍ରାସ କରୁଛି. Next question number 40. The red data book contains information about endangered species. ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଜୀବମାନଙ୍କର. Option B. Which of the following is a major cause of deforestation? Deforestation ଟା କଣ? କୁହନ୍ତୁ deforestation କାହିଁକି ହଉଛି? Need ବି ଅଛି ଏହା ସହିତ greed ବି ଅଛି ଦୁଇଟା ଯାକ ରାଇଟ୍. ସେଥିପାଇଁ deforestation ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ. ତ ଅପସନ୍ସ ଅନୁସାରେ କଣ ହେଇଯିବ? Generally agricultural ଯୋଉ expansion. Option B is your right answer. Next question number 45. The term ecology was coined by Ecology परिसंस्था शब्दटी प्रथमे किए ଦେଇଥିଲେ? अर्निस्ट हेकेल ଦେଇଥିଲେ. अर्निस्ट हेकेल is your right answer. Next. Which of the following is a decomposer? निम्नलिखित मध्यରୁ କେଉଁଟା ଏକ decomposer ଅଟେ? ଅଙ୍ଗୀ ହେଇଯିବ କି? କବକ is your right answer. Next question number 47. The conservation of fertile land into desert like condition is known as कौन ହେଇଯିବ ଏଟା? Desertification. Option A ହୋଇଯିବ right answer. Next question number 48. Which of the following Indian laws specifically deals with the wildlife protection को नेकी? Wildlife Protection Act 1972. Option A. Next. The Air Preservation and Control of Pollution Act in India was enacted in याकू लागू करा जायतिला 1981 रे. भारत रे वायु जे आपनकर प्रदूषण निराकरण और नियंत्रण आईन 1981 मसिया रे आगत होइतिला. Next. The Environment Protection Act in India was enacted in Environment Protection Act 1986 मसिया. Which of the following is a major source of noise pollution in urban area रे? ट्रैफिक है जो ट्रैफिक रे अधिका शब्द प्रदूषण हुए. Next. The movement of water through evaporation, condensation and precipitation is called water cycle को आजिबो. Next. Which of the following is an example of food chain? Food chain रो केउंटा example हबो कोंतु? Food chain रो example केउंटा हिजिबो? Arrangement होची grass, then grass for जोटा चिंटिका, then frog, then snake. Option A is your right answer. Next. Which Indian environmental movement is associated with the protection of the Western Ghat? Western Ghat रो protection को नेकी. इस आपनकर कोन हिजिबो Western Ghat रो? एपिको गोटे मूवमेंट हितला. एपिको मूवमेंट आंदोलन Western Ghat रो protection को नेकी. Next question number 55. The main objective of rainwater harvesting is to मुख्य कारण कौन? वाटर को कंजर्व करबा पई. तो कंजर्व वाटर इज राइट आंसर. Which of the following is a fossil fuel? Fossil fuel के उठा हिजबो? कोयला होची एको fossil fuel, coal. Next question number 57. The term carrying capacity refers to कौन हिजबो? Maximum population and environment can sustainably support. This is आपनकर carrying capacity माने जो धारण करिवार क्षमता. Which of the following is an important carbon sink? Carbon sink आपनकर निम्नलिखित मध्यରୁ केउंटा हिजबो? Forest is your right answer. जंगल गुडी करे प्रचुर CO2 माने CO2 आपनकर निर्गत हुए, माने शोषण हुए. CO2 टा कोन हुए? शोषण हुए. तो ये कार्बन सिंक. Next. Which gas is essential for respiration in human? Oxygen, अम्लजान. श्वासक्रिया रे अम्लजान रो आवश्यकता था. Next question number 60. The largest source of oxygen in the earth atmosphere is primarily associated with question number 60. Oceans and photosynthetic organism. Option A होइज राइट आंसर. समुद्र रे थिबा जो आपनकर कोन सेटा? Largest source of oxygen in the earth atmosphere is primarily associated with the ocean and photosynthetic organism is your right answer. Next.
which of the following is not a renewable source of energy? A renewable source of energy oil is what item. Next, the term sustainable development was popularized by the କିଏ କରିଥିଲେ କେଉଁ କମିଶନ ହେଇଯିବ ବା or କେଉଁ କମିଟି? Brundtland Commission, right? Brundtland Commission द्वारा sustainable development को popularize करा जाइଥିଲା. Next, the three R's of waste management stands for. 3R कौन जो reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Option A is your right answer. Next question number 64 try karantu. Which of the following disease is associated with the arsenic contamination of drinking water? क्यों disease ହେଇଯିବ पानीय जल रे जो आर्सेनिक प्रदूषण जोगु कौन हुए आर्सेनिकोसिस गोटे रोग हुए. Next question number 65. Which of the following is a natural source of air pollution? Volcanic eruption कहि परिबा the natural source. Next, a species found only in particular geographical area is called. Only particular geographical area रे मिलिबो this is endemic. Option B is your right answer. केवल एक निर्दिष्ट भौगोलिक अंचल रे मिलुथबा जीवन को endemic प्रजाति कहि परिबा. Next, which of the following is a major cause of soil erosion? मृत्तिका क्षयर मुख्य कारण कौन? Deforestation. Next, the Wildlife Protection Act of India was enacted in Wildlife Protection Act 1972 मन रखंतु. प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च केबे करा जायतिला 1973 तो 77 yes 1973. Next, which of the following is India's first biosphere reserve? Nilgiri is the right answer. First biosphere reserve. Next, which ecosystem is characterized by the very high salt tolerance and tidal influence? Which option is your? तो मैंग्रोव इकोसिस्टम रो कथा कहि परिबा. ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. द सुंदरवन आर फेमस फॉर सुंदरवन कोन? सुंदरवन आपनकर मैंग्रोव फॉरेस्ट पई अधिक प्रसिद्ध अटे. राइट, एंताला वन देखिया पई पाइबा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर थ्रेट ऑफ बायोडायवर्सिटी? मेजर थ्रेट विषय जदि कथा बा आपनकर जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हिजबो. ऑप्शन ए होइज राइट आंसर. ओके, जीव मानकर जो प्राकृतिक बासस्थली नष्ट हेबा जैव विविधता प्रति सबठारु बड़ विपद. द साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन साइलेंट वैली आपनकर केरल रे रहिछि. साइलेंट वैली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर? सेकेंडरी कंज्यूमर विषय जदि कथा बा फ्रॉग हे परियो सेकेंडरी कंज्यूमर. नेक्स्ट, द एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन ट्रॉपिक लेवल्स इज जनरली कोन हे जो एटा आपनकर जो गोटे नियम थिला ना आपनकर लिंडामैन को जो नियम अनुसार गोटे स्तर रु अन्य स्तर को 10 शतकड़ा पाखापाखि आपनकर एनर्जी ट्रांसफर हुए. सो इट्स अबाउट 10% efficient is one. Next question number 77. Which of the following pollutants is most closely associated with the photochemical smoke? This is nitrogen oxides and hydrocarbons is your right. Option A is your right answer. Nitrogen oxide and hydrocarbons to आलोक रासायनिक प्रतिक्रिया रु सृष्टि हुए. Next question number 78 try करंतु. Which international agreement aim to conserve biological diversity? 78. सेति पय आपनकर कोन करा जाय जैव विविधतार संरक्षण पय CBD. This is आपनकर Convention on Biological Diversity is your right answer. Option A. Next कहंतु. The Basel Convention deals mainly Basel Convention कोथि पय हितिला बासेल जो सम्मेलन विपज्जनक जो वर्ज्य वस्तुर नियंत्रण करिबा पय. सो hazardous waste management is the right answer. Next question number 80. Which of the following is a major source of water pollution? Water pollution ro major source untreated sewage is untreated sewage.
सो जो अपरिष्कृत जो मैला पानी आवर्जना ठीक है जल प्रदूषण मुख्य कारण अनट्रीटेड सेवेज नेक्स्ट the concentration of pollutants in organism at higher trophic level is known as higher trophic level जोटा होय आपनकर is bio what is bio magnification option A is your right answer next which of the following is used to measure the biological oxygen demand of water BOD biological oxygen demanding quadrant high BOD in water body generally indicates high BOD on is your high organic pollutant option B is your right answer next which of the following is a method controlling soil erosion ପାଇଁ ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ ପ୍ଲଗିଂ କରିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି counter plugging option A होइज राइट आंसर राइट counter plugging सो ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକା ଯାଇ ପାରିବ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन नंबर 85 which of the following is an example of natural greenhouse effect natural greenhouse effect विषय जति कथा बा warming caused by the atmospheric gases भी करियो option A is your right answer the main cause of the ozone layer is to absorb कौन ultraviolet radiation option B होइज right answer next which of the following is a consequence of global warming consequence तार जो परिणाम result कौन हबो sea level rise हबो option A is your right answer which Indian state is particularly known for large scale mangrove ecosystem in Sundarban West Bengal Sundarban कथा कहबा हेंताल बनडा West Bengal next question number 89 which of the following is not a greenhouse gas nitrogen is your right answer next question number 90 try करूँ the process of planting trees on barren land is called barren land this is कुआजु आपनकर afforestation next question number 91 which of the following is the most important factor responsible for maintaining biodiversity this is habitat conservation is your right answer next a food web कोन कहंतु food web कोन is food web but a network of interconnected food chains this is food web next which of the following is a abiotic component of an ecosystem abiotic component apanakar temperature next which of the following is a biotic component plant is next question number 95 the process of breakdown of dead organism matter by microorganism is called this is called decomposition next question number 96 which of the following is a major source of thermal pollution ro major source कौन है परिबो thermal power plants option A बहुत easy next which environment problem is directly linked to the excessive use of the chemical fertilizers this is क्वाजो आपनकर eutrophication right रासायनिक सार रो व्यवहार जोगु नदी किबा पोखरी जल रे नाइट्रोजन रो परिमाण बढ़ी eutrophication सृष्टि हुए the term ecological succession refers to ecological succession कौन है जो gradual change in community composition over the time माने जो समय अनुसार कौन हम कौन सी स्थान जीव गोष्ठी क्रमिक परिवर्तन को ecological succession next question number 99 which of the following is a protected area category in India protected area आपन national park ना national park is your right answer next आज last question try करंतु the ultimate goal of environment conservation is to मुख्य लक्ष्य कौन मुख्य लक्ष्य होची परिवेश रो संरक्षण रो जो मुख्य लक्ष्य कौन परिसंस्था को संतुलन रक्षा करिवा आ जहाँ भी संपद अछि त सस्टेनेबल यूज ऑफ द रिसोर्स सो मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द रिसोर्स ऑप्शन बी इज द राइट तो यह थिला आपनकर ज्योग्राफिकल फैक्ट को इंपोर्टेंट 100 MCQs आउट ऑफ 100 आपन केतोटी प्रश्न करि पारिछंती कमेंट सेक्शन रे आपन जणाई परिबे आपन ई पीडीएफ नोट वीडियो डिस्क्रिप्शन को डाउनलोड करि परिबे क्लास को लाइक शेयर करबा सहित आपण एही चैनल रो जॉइन बटन रे जॉइन करी मध्ये मेंबरशिप नै परिबे सपोर्ट करि परिबे ओके आई होप ए क्लास टी आपण मानक पई बहुत यूजफुल हबो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास